Hi guys, so moving on to the next question. Now let's suppose we have a linked list, right? From 1 to 7 and the member are data and next, right? And your head is pointing to the first node, right? So now let's solve this. Now I'm writing struct node star head, so head is pointing at the first node. Let's suppose the address is 100. Okay. Now if head is equal to null, so condition is false. So what is happening? We are calling this function and we have passed the head, right? So this condition is false. So we are moving on to this. First we are printing head data. So what is head data? Head data is 1, right? Now moving on to this. If head of next is not equal to null, so head next is, let's say 100, next is, I am assuming it is 200. So if 200, so condition is true because head next is definitely not null. So condition is true. If condition is true, what we are calling? We are calling this function head next. Let's suppose 100, this address is 200, this is 300, 400, 500, 600, 700. So it means that one next is containing 200, two next is containing what? 300. So now head next not equals null, head next is 200, so 200 not equals null, condition 2. So we are calling this function head next is what? 200, 200 next is 300. So it is your function 300, right? And after that you are calling printf head data. After this you are calling head data. It means after this you are calling, in fact not calling, you are printing 300 data, right? Now we will call this function f300. So when you call this function f300, 300 equals to condition false, 300 data is 3, and then if head of next not equals null, 300 next is your 400, which is not equals null, your condition is true. So when your condition is true, what you are writing head next ka next, 300 next is 400, 400 next is 500. So here comes your 500, and then you are printing here 500 data, right? You are printing 500 data, head data. No, not 500 data. See, check this. Initially f100, 100 data is 1. Then if head of next not equals null, which means if 200 not equals to null, then head next, this becomes f300. Then you are again printing head data. Head is 100 only, not 300. It is not head is equal to something. So it is 100 data only, not 300. It is 100 data only, right? Similarly, when you call this function f300, so it is 3. If 400, right, this condition is true, head of next not equals to null. So when this condition is true, head next, 300 next is 400, 400 next is 500. So then you are calling this function, and after that you are printing head data. Head is 300 only, so it is 300 data, right? Now when you call this function f500, so 500 is equal to null, your condition is false. So 500 data is what? 5. 500 data is 5. Then if head of next is not equals to null, which is 600, so this is not equals to null. So your condition is true, right? Then you are calling this head next. 500 next is 600, 600 next is 700, right? So I am writing here, after this it is f700, right? So then you are printing head data. So here I am writing 500 data. You are printing. So 500 data you are printing here. Right there. Now you call f700. 700 is equal to null. Condition is false. So you print 700 data, which is 7 gets printed. Now if head of next is not equal to null, where my head next is null, so this condition is false. So now you come to this statement, printf head data. Head is my 700, right? So 700 data is 7. फाइन. अब मेरे को बताओ सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ. देखो सबसे पहले फंक्शन आया 1, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये 1 गेट्स प्रिंटेड. 1 के बाद ये फंक्शन कॉल हो, इसके बाद इसने प्रिंट किया 3 गेट्स प्रिंटेड. 3 के बाद ये फंक्शन आया, इसको प्रिंट किया 5 गेट्स प्रिंटेड. इसके बाद ये 600 वाला फंक्शन आया,
तो 7 गेट्स प्रिंटेड, ठीक है। इसके बाद मैं इधर गया, ये 7 प्रिंट हुआ, उसके बाद 300 का डेटा प्रिंट हुआ, 300 का डेटा कितना है 5 7, ठीक है। फिर 7 के बाद 5 प्रिंट हुआ, 500 का डेटा आएगा यहाँ पे कहीं पे, हाँ इधर था 500 डेटा। 7 के बाद प्रिंट हुआ 1357, फिर 7 वहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर 5 यहाँ पे, देखो देखो तुम अब F500 को कॉल करोगे, 500 का डेटा प्रिंट हुआ, हेड ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल हुआ, 600 नॉट इक्वल्स टू नल हुआ, ठीक है। उसके बाद ये चीज, और यहाँ पे 500 का डेटा होगा, 500 डेटा, बिकॉज हेड की वैल्यू 500 है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज होगी, तो 1 सबसे पहले 1357, फिर जस्ट उसका रिवर्स कर दो, 7 5 then 3 then 1, so that's the answer, 1357 7531। अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। यहाँ पे कंफ्यूजन है, बस एक ही डाउट आता है कि हम यहाँ पे कंफ्यूजन है, हेड डेटा लेते रहते कभी इसका डेटा ना ले लो, बिकॉज ये मैंने असाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सिंपल आई एम राइटिंग हेड नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हेड नेक्स्ट नेक्स्ट तो तुम्हारा ये नॉर्मली 500 रहेगा, पर जो डेटा प्रिंट होगा हेड का डेटा, हेड आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो हेड ये रहेगा 300 डेटा, तो यहाँ पे 300 डेटा, यहाँ पे 500 डेटा, यहाँ पे 700 डेटा, ठीक है। तो पहले तो आप प्रिंट करोगे 1 ऑल्टरनेटिव नोट्स 1357, फिर जस्ट उल्टा 7531 प्रिंट हो, सबसे पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला फंक्शन आया 7 के बाद आया 5, फिर आया 3, फिर आया आपका 100, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ओके, टेक केयर गाइस।